आधारविन्दशतकं श्लोकं 84 भवत्या कामाक्षी स्फुरितपदपङ्केरुकभुवा परागानं भूरैः परिकृतकलङ्गव्यधिकरैः नतानामावृष्टे हृतयमुपुरे निर्मलरुचि प्रसन्नेनेचेशं प्रतिपदति विश्वं गिरिषुते तव त्रस्तम्भादात् किशलयमरण्यान्दरमकात् परं रेखारूपं कमलममुवेवासिदमभृत् जितानां कामाक्षी विदयमभियुक्तं परिपवे इदे चेवाशो वा चरणकमनं वारिजरिपोगो गृहीत्वायाधात्यं निगमवचशां देचितकृपा कडाक्षर्यज्योति चमितममता बन्धतमसग यदन्ते कामाक्षी प्रतिदिवशमन्ददृढयितुं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजना ऐडानामय्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोगो रमन्मन्दक्ष्मा भृगुम मुगुमिदसिन्धु प्रतिपडा प्रसन्ना कामाक्षी प्रसभमदर स्पन्दनकराः विभान्तु स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वा पनितयः वकण्णव्यशान्तं मधुरनिनदं हंसकमशौ तमेवाधः कर्तुं किमिव यदते खेलिकमने भवशैवानन्दं वितततभिकामाक्षिचरणो भवत्यास्तत्रोकं भगवति किमेवं वितनुते यदत्यन्तं धाम्यत्य लसगति वार्ताश्वपि शिवे तदेतत् कामाक्षी प्रकृतिमृदुलं ते पदयुकं किरीटैशङ्कटं कथमिव शुरौकैश्च सकते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिचिते मनोरङ्गे पद्ये विपुतजनसम्मोदजननी सरागव्याशङ्कं सरसमृदुसञ्चारशुपका मनोज्ञा कामाक्षी प्रकटयतु लाशप्रकरणं रणन्मञ्जीराते चरणयुगली नर्दकवधूः परिष्कुर्वन्मात पशुपतिकभर्तं चरणराट् पराचां कृत्पद्मं परमममिपनिदीनां च मकुटं भावाके पादौ तौ परिहरतु कामाक्षि ममता पराधीनत्वं मे परिमुषितपादो जमहिमा प्रशूनैशम्बर्कातमरतरुणी कुन्दलपवैः अभीष्टानां दानात् अनिचमभिकामाक्षि नमतां स्वशङ्गाद्गङ्केली प्रसवजनकत्वेन तव शिव हृता दत्ते वार्तां सुरभिरतिपादो गिरिषुते।